A lot of you guys are asking me questions कि यार अभी के करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट के हिसाब से क्या अमेरिका में मास्टर्स करने आना एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग माई ओपिनियन, लेट मी डू सम रिसर्च, लेट मी टेक अ लुक एट द डेटा एंड द रिपोर्ट्स एंड देन मेक एन एजुकेटेड प्रेडिक्शन कि यार अगर अभी आप मास्टर्स करने आते हो तो आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है। एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू डू द सेम इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू अमेरिका और गो टू एनी अदर country for your masters. Then look at all the data, look at all the numbers and the reports, and then add your own research on top of it, and then make an educated prediction कि यार अगर मैं जाता हूँ तो क्या, what are the probabilities and what could happen, what is the worst case scenario, what is the best case scenario, and then it's your decision, right? I can only give you my opinion on it, but ultimately the decision has to be yours. So before we dive into the numbers and look at the data itself, if you have not subscribed to my channel, then please hit the subscribe button. I make videos about life in America. Without any more delays, let's get started. And the first thing that I want to show you is the number of international students which are coming to America year over year. If you look at this chart, you can see that there has been a steady growth in the number of international students which are coming to America for studies, except the year 2020-2021 यहाँ पे एक significant drop हमें देखने मिला। This drop is because of कोविड के टाइम में बहुत सारे वीजा restrictions लग गए थे and international travel काफी जगह पे बैन हो गया था, even in USA. So that is why less number of students who could come to America for studies. तो इसलिए आपको वो drop दिख रहा है, but 2022 में आप देख सकते हो कि वो नंबर वापस ऊपर चला गया है और more than 1 million students came to America for studies. Now this number includes everyone. It includes F1 students, it includes M1 students which are like exchange students that come to America. And where are these numbers coming from? These numbers are coming from a report which is released by SEVIS. Now whenever you get an admit, you get an I-20 from the college और अपने I-20 में आप टॉप पे देखोगे कि एक SEVIS ID मेंशन्ड रहता है। तो वो SEVIS जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रैक करता है कि अमेरिका में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, वो कौन सी कंट्री से हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं और वो कौन सा मास्टर्स करने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो उस रिपोर्ट में कैप्चर होती हैं एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दे रिलीज अ रिपोर्ट कॉल्ड SEVIS by the numbers, which is an annual report. और इस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली चीज जो मैं इस रिपोर्ट में हाईलाइट करूंगा वो ये है कि बिटवीन द ईयर 2021 and 2022 there has been a 10% increase in the number of international students which are coming to America. The 10% is approximately equal to 125k. Even though this looks like a big number, it's not that much of an increase. It's like standard. अगर आप इस पूरे चार्ट को देखोगे तो over a period of 10-20 years the number of students are gradually increasing. तो ये तो natural है कि थोड़ा तो increase होगा ही। अगर इस रिपोर्ट में आप आगे जाओगे तो आप ये भी देख सकते हो कि what is the breakdown, कितने बच्चे मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं और कितने बच्चे बैचलर्स करने के लिए आ रहे हैं। तो out of the 1 million total number, 41% have come for a master's degree and 37% have come for a bachelor's degree. यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए वो कौन सा डिग्री प्रेफर कर रहे हैं। तो सबसे टॉप पे अपना कंप्यूटर साइंस है with 91,000 plus students deciding to do a major in computer science. It could be a bachelor or it could be a master's degree. On the fourth number you have computer and information sciences and you also have information technology at the bottom here. But in general आप top 20 में देखो तो IT के बहुत सारे डिग्रीज हैं जो बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। So this is basically a good sign that majority of people are doing these types of courses. You also have mechanical engineering over here. You also have electronic and electrical engineering. तो ये सारे मेजर्स भी हैं जो लोग करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी कंट्री से आ रहे हैं। टॉप पे चाइना है with 3 lakh plus students coming to America, and then you have India on the second number with approximately 3 lakhs, close to 3 lakhs. एक लास्ट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस रिपोर्ट में कि between the year 2021 and 2022 there has been a 27% increase in the number of students that are coming to America from India. एट द सेम टाइम चाइना से 7% का डिक्लाइन हुआ है बट इंडिया से 27% का इंक्रीज हुआ है विच इज अ गुड सब्सटेंशियल इंक्रीज एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2023 में ये इंक्रीज और ज्यादा होगा। 2023 का रिपोर्ट जैसे ही आएगा आई विल ऑल्सो अटैच दैट इन द डिस्क्रिप्शन। ये तो हो गई सारी बातें अबाउट स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग टू अमेरिका फॉर स्टडीज। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज OPT। अगर आप F1 वीजा पे आते हो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए तो आपके पास टोटल 5 साल होते हैं, उसमें से 2 से 3 साल आप लगा देते हो अपना मास्टर्स करने के लिए और बचे हुए 2 साल आप जॉब कर सकते हो। जॉब करने के लिए आपको चाहिए रहता है EAD कार्ड विच इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड और वो कार्ड आपको मिलता है USCIS से। जब आपका मास्टर्स खत्म होने वाला रहता है, आप लास्ट सेमेस्टर में रहते हो, उस टाइम पे 90 days बिफोर यू ग्रेजुएट यू अप्लाई फॉर एन EAD कार्ड सो दैट बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू हैव दैट कार्ड एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। USCIS वाले एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर
which tells you कि कितने लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई किया और कितने लोगों को मिला, कितने लोगों का रिजेक्शन हो गया। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट कंप्लीशन OPT, which is basically an OPT when you complete your masters, around 1,76,000 students applied, and out of which 1,70,000 students got it and 4,800 were rejected. The whole point of me showing this report is that कि जितने लोग भी अप्लाई कर रहे हैं 95% प्लस स्टूडेंट्स को अप्रूवल आ जा रहा है, मतलब they are able to get the AD card. Once they have the AD card they can start working, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि यार जो भी बच्चे काम करना चाहते हैं राइट आफ्टर दे ग्रेजुएशन दे कैन स्टार्ट वर्किंग, एंड इट्स नॉट लाइक देयर EAD cards are getting rejected because of which they can't work. When you are working as a student on F1 visa, you are on your STEM OPT. Your STEM OPT is only for 2 years, and by the time your F1 visa expires you have to change your visa category on and go on H1B visa. This is the next point I want to talk about, which is your H1B visa lottery, because anybody who wants an H1B visa has to go through a lottery, or H1B visas limited hai. Every year you only have 65,000 H1B visas for the normal plot, and then you have 20,000 special H1B visas which are reserved for master students. So if you are a master student you have a little bit of an advantage where you'll have more chances of your visa getting picked up in the lottery, but overall it's only 85,000 visas per year. You can go on the USCIS website and they give you details on how many people applied for an H1B visa and then how many people got it. If you look at this data from the year 2021 to 2024, there has been a very good amount of increase in the number of total registrations. 2023 और 2024 में almost double होता जा रहा है number of registrations each year, and which is not a good sign frankly, because total number of visas that are given each year for H1B are fixed, which is 85,000 like I said. अगर ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि the chances of your application getting picked up in the lottery are even less, and then it will become that much difficult to get an H1B visa. Total number of registrations इतने ज़्यादा बढ़ गए in 2023 and 2024 because USCIS ने अपना application process change कर दिया. जब मैं अप्लाई किया था तो उस टाइम पे ऐसा था कि आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट, सारा डिटेल्स आपको पहले भेजना है, एंड यू हैव टू पे अ बिग अमाउंट ऑफ application fee as well. I mean, I did not pay, the employer who I was working for paid it, but the fees were substantial. But in 2023 they changed the rule where they said that you can only pay $10 for doing a registrations, and when your application gets picked up in the lottery, that is when you send all your other documents and the additional fee that you have to do, you do it later. So they try to do this because they wanted to make the application process easy for the employers and not that costly. बट उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि बहुत सारा फ्रॉड चालू हो गया है, पीपल स्टार्टेड डूइंग मल्टीपल एप्लीकेशंस। इस कॉलम में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल एलिजिबल रजिस्ट्रेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पर्सन को 4-5 जगह से जॉब ऑफर आया और उसने क्या किया कि 4 एप्लीकेशंस कर दिए, थिंकिंग दैट ही विल हैव 4 एप्लीकेशंस, दैट मींस हिज चांसेस ऑफ गेटिंग पिक्ड अप आर मोर. फ्रैंकली इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट, बिकॉज यू आर देन अफेक्टिंग अदर इंडिविजुअल्स हु ओनली हैव 1 एप्लीकेशन. USCIS ने ये पकड़ लिया है एंड दे आर फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम. नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे वांट यू टू सेंड योर पासपोर्ट. सो 1 passport is equal to 1 application. Even if you have multiple applications from multiple different employers, it is all tied to 1 passport, so that is going to be one place in the lottery system. Nonetheless, आप देख सकते हो कि number of total registrations are increasing on a yearly basis, and the more it increases, the more difficult it is going to be for you to get an H1B visa. यहाँ पे selection numbers आपको थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं because what they do is जैसे flights में overbooking होती है, वैसे यहाँ पे भी they pick up higher number, and then इसमें से बहुत सारे लोग drop out कर लेते हैं, अपना application revoke कर लेते हैं, बहुत सारे इसमें से reject भी हो जाते हैं. तो ऐसा करके ultimately they come close to 85,000, which is the actual number that they give out visas to. In my personal opinion, this is one of the major problems क्योंकि number of H1 visas limited हैं. तो the chances of you staying in America long term after you graduate, like अगर आपका already पहले से plan नहीं है अमेरिका में रहने का, तो आप यहाँ पे मास्टर्स करो, 2 साल काम करो, you probably make some money and then you go back. But if you want to continue to stay here, you have to transfer your visa and get an H1B visa. Without that, you cannot stay in America, and getting that H1B visa is getting even more difficult year by year. So unless the government comes with a plan to increase the number of H1B visas, this problem is still going to be there, and then it's going to get even more difficult going forward. The next thing that I want to talk about is the general growth in the IT sector. So that is obviously on an upward trend for the next 10 years till 2030. You can see that in almost all of these IT fields, whether it could be computer programming, whether it could be data scientist, all of them are seeing an increase in the number of jobs that are going to be available. So this is definitely a good sign because IT industry in general is doing good right now, and
the data also tells you that it's going to be doing good in future as well. So this is something that is going to be in your favor if you are in the IT industry. अगर jobs के बारे में बात कर रहे हैं तो layoff के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी. In the past 2-3 years after COVID got over, we are seeing a lot of layoffs happening across lot of different companies in the IT field. अगर आप 2022 में देखोगे, you have about 1,000 plus tech companies with 1,65,000 plus employees being laid off. The number was very similar in 2023 as well. We have 1,121 tech companies with 2,62,000 employees being laid off, and in 2024 the wave is still going on. Up till March we have 193 tech companies that have laid off approximately 50,000 employees. When the industry is good in general and the economy is going up, then these companies are hiring a lot of people, but then when things are not looking that good, companies start firing. You don't actually have to worry about this. If you are working on your skills and you are making yourself capable, then you can survive this wave of layoffs. People who do not actually change with times and keep improving on their knowledge, they get laid off because they fall at the bottom of the pyramid, right? But frankly, if you're coming here for masters today, you don't have to worry about layoffs that are happening now. The scenario could very well change in 2 years, 3 years down the line. मैंने आपको बहुत सारे data points सिखाए. Now I will give you my personal opinion, like doing this research and figuring out these numbers. What is my perspective on this one? तो कुछ चीजें जो हैं वो हमारे फेवर में काम कर रही हैं, जैसे number of jobs that are there that will grow. The IT industry in general is doing good at this point, so that is a good thing for us. अभी अमेरिका में elections भी आने वाले हैं 2024 में, so probably power will change hands, and in that case good things can happen. So वो भी एक देखने वाली चीज होगी कि क्या होता है फ्यूचर में. So these things are working in our favor. What are the bad things? Bad things are like कि ये जो H1B वीजा का जो लिमिट है वो 85,000 का ही लिमिट है, which is a small number, and with the number of new applications, with the number of new people who want to come to America for studies and who want to actually immigrate to America, उसके बेसिस पे ये नंबर बहुत छोटा हो गया है. इसकी वजह से लॉटरी में chances of you getting picked up, like I read somewhere it says like for every 10 people who apply, only 1% gets picked up. So it's going to get even more drastic, right? And it's going to get even more difficult to get an H1B visa. So if you don't get an H1B visa, the chances of you staying in America are even more less. टैलेंट का और स्किल का शॉर्टेज तो अमेरिका में है ही, तो अगर ये टेक कंपनीज ग्रो करेंगी, अगर IT इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो डिमांड तो हमेशा वहां पे रहेगी. और अगर डिमांड रहेगी तो द गवर्नमेंट विल हैव टू कम अप विद सम प्लान टू एड्रेस दैट, राइट? अमेरिका अपने पॉलिसीज में चेंजेस नहीं लेके आएगा. ये H1B वीजा प्रोग्राम को शायद अगर नंबर ऑफ वीजास को नहीं बढ़ाएगा तो लोग अमेरिका में नहीं आएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इंडस्ट्री इज गोना सफर. सो अगर IT इंडस्ट्री ग्रो करता रहेगा, then definitely the government will have to come and make some changes, and I'm positive that things will become better. बाकी सारा डेटा आपके सामने है, आप भी इन रिपोर्ट्स के थ्रू जाओ और स्टडी करो कि क्या आपको लगता है, and see if you can take that risk. If you have any questions, comments and feedback, then put it in the comment section. If you're still watching, then please subscribe to my channel. Thank you so much for watching and have a nice day.